हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम सिंथेसिस के थोड़े वास्ट वर्जन के बारे में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें सिंथेसिस का वास्ट वर्जन। रितु वाज सैड। रितु वाज सैड। रितु दुखी थी। सी वेंट हर होम। सी वेंट हर होम। वो घर को गई। रितु दुखी थी इसलिए वो घर को गई। जब हम इसको बनाएंगे सिंथेसिस के फॉर्म में तो कैसे होगा, देखिए। बीइंग सैड, रितु वेंट हर होम। रितु वेंट हर होम। दुखी होकर के रितु अपने घर को गई। वीडियो को स्किप ना करें प्लीज, पूरी देखें। अगला देखें सेंटेंस। द बेगर वाज लेम। द बेगर वाज लेम। भिखारी जो था, लेम लंगड़ा था। द बेगर वाज लेम। भिखारी लंगड़ा था। ही कैन नॉट रन। वो दौड़ नहीं सकता था। ही कैन नॉट रन। वो दौड़ नहीं सकता था। जब हम इसको बनाएंगे सिंथेसिस के फॉर्म में तो कैसे बनाएंगे, देखिए। बीइंग लेम, बीइंग लेम लंगड़ा होकर के, द बेगर कैन नॉट रन। द बेगर कैन नॉट रन। भिखारी दौड़ नहीं सकता था। लंगड़ा होने के कारण भिखारी दौड़ नहीं सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज विजिट करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाइप करें। द बिच वाज मेड। द बिच, द बिच was made, it started biting the pupil. It it started biting the pupil. It started biting the it started biting the pupil. कुतिया पागल थी। इट स्टार्टेड बाइटिंग द प्यूपिल। इसने लोगों को काटना शुरू कर दिया। अब कैसे इसको कंबाइन करेंगे या सिंथेसिस करेंगे, देखिए। बीइंग मेड, पागल होकर के, द बिच स्टार्टेड बाइटिंग द प्यूपिल। द बिच started biting the pupil. पागल होकर के कुतिया ने काटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। आजाद was surrounded by the police. आजाद was surrounded by the police. आजाद पुलिस ने घेर लिया। He killed himself. He killed himself. उसने स्वयं को गोली मार ली या मार लिया। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए।
Being surrounded by the police, by the police, being surrounded by the police, Azad killed himself. Azad killed himself. पुलिस से गिर जाने के बाद आजाद ने खुद को मार डाला। या इसका दूसरा फॉर्म बनाएंगे, देखिए, हैविंग बीन सराउंडेड, घिर जाने के बाद बाय द पुलिस, पुलिस से घिर जाने के बाद आजाद किल्ड हिमसेल्फ। आजाद किल्ड हिमसेल्फ, आजाद ने खुद को गोली मार ली। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, शास्त्री जी वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। शास्त्री जी वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। गांधी जी, शास्त्री जी गांधी जी से इंस्पायर थे। ही फॉलोड नॉन वायलेंस, he followed non violence, इसलिए उन्होंने अहिंसा को फॉलो किया। इसका कैसे बनाएंगे कॉम्बिनेशन, देखिए, बीइंग इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, बीइंग इंस्पायर्ड being inspired by गांधी जी, गांधी जी से इंस्पायर होकर शास्त्री जी फॉलोड नॉन वायलेंस, शास्त्री जी फॉलोड नॉन वायलेंस। कमेंट सेक्शन में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अंग्रेजी सीखने के लिए अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।